Hello students, what is going on? My name is Abdullah Momin from KMES English Medium High School and Junior College, and in this video we are going to derive the equation of acceleration, velocity and displacement of a particle performing SHM. So the very first thing which we are going to see is the derivation of acceleration, velocity and displacement of a particle performing SHM, and then after that we are going to see the extreme values of displacement, velocity and acceleration. So acceleration, in order to find out the equation of acceleration, we will use the differential equation. From our last lecture we have seen that the differential equation of linear SHM is d square x by dt square plus omega square x is equal to 0. So when we will take this plus omega square x to the another side of the equal sign, it becomes minus omega square x, and this and we know that velocity is dx by dt, that is rate of change of displacement is velocity and rate of change of velocity is acceleration. So instead of we are going to put dx by dt, it becomes d square x by dt square. This is the formula of acceleration. So here acceleration is d square x by dt square, and this equation is this. So we can write acceleration is equal to minus omega square x. So this is the expression for acceleration in terms of displacement. Now in order to find out the velocity, we know that acceleration is d square x upon dt square is equal to minus omega square x. But we also have the equation of acceleration is rate of change of velocity, that can be written as from this equation. So rate of change of velocity is acceleration and minus omega square x is also acceleration. So multiplying and dividing left hand side of the above equation by dx, we are going to multiply this term with dx and divide it by dx. So we can write dv by dx into dx by dt. This dx and this dx will get cancelled and we will get the same equation. So we are going to multiply and divide this equation by dx. So dx by dt can be written as velocity. So v into dv by dx is equal to minus omega square x. Now v into dv, we will taking dx to the another side of the equal sign. So v into dv is equal to minus omega square x dx. Now integrating above equation, in order to cancel the derivative, that is dv and dx, we will integrate this equation. So by integrating this equation, integration dv by v into dv is equal to integration minus omega square x dx. This minus omega square taken outside the integration because it is constant, and we have the formula of integration of x raised to n dx as x raised to n plus 1 divided by n plus 1. So in this term the power of x is 1, means instead of n we have 1. So integration of x raised to 1 dx is can be written as x raised to 1 plus 1 upon 1 plus 1, that will be x square by 2. Similarly, integration of v dv can be written as v square by 2. So we are going to put these terms in this equation. So we can write v square
by 2 is equal to minus omega square, and the integration is x square by 2 plus c, some constant, where c is the constant of integration. Now at extreme position, the displacement is either minus a or plus a. When the particle is at positive extreme position, its displacement is plus a. When the particle is at negative extreme position, its displacement is minus a. And the value of velocity at extreme position is v. Now you can see this in this animation. When a particle is at extreme position, it is going to come back towards the main position, and the point from which is returning back, it is stopping for a fraction of second. So due to this, the velocity will be minimum or zero. So we are going to put these values in above equation. So instead of v, we are going to put 0. So the whole term will become 0 minus omega square, and instead of x square, either it will be plus a square or minus a square. So plus a or minus a square, that means a square by 2 plus c. So minus omega square a square by 2 comes another side of the equation, and we will get c is equal to omega square a square by 2. Now putting equation 2 in equation 1, this is the equation of c. We are going to put this equation in above equation. Let me clear this screen first. So now putting the value of c in this equation, we will get v square by 2 minus omega square x square by 2 plus c. Instead of c, we are going to put omega square a square by 2. So now we have this equation. So rearranging the term, minus omega square x square by 2, we are writing it after the first term, and this positive term we are writing earlier. So 2, 2 and 2, which is common in all term, get cancelled. We will get v square is equal to omega square a square minus omega square x square. Now omega square and omega square is common, so we will get v square is equal to omega square a square minus x square. Now when you will take the root, we will get v is equal to plus minus omega square root of a square minus x square. This is the expression for velocity of a particle performing SHM in terms of displacement. So this is velocity. Now next we are going to find out the displacement. So we know that velocity is plus minus omega a square root of a square minus x square, and velocity is also can be written as rate of change of displacement. So we can write dx by dt is equal to omega a square minus x square. Now we will take this square root term, that is a root a square minus x square, to the another side of the equal sign, and we will take dt instead of root term. So we will get dx divided by root a square minus x square is equal to omega dt. Now integrating above equation, and the integration, this omega is constant, it will comes outside the integration, and the integration of this term is sine inverse x by a. So we can write sine inverse x by a, integration of dt is nothing but t plus phi, where phi is the constant of integration. So sine inverse means 1 upon sine. We will take this to another side of the equal sign. So x by a is equal to sine omega t plus phi, and a comes another side, it will becomes x is equal to a sine omega t plus phi. This is the general expression for displacement of a particle performing linear SHM at time t. Now let us find the expression for displacement for two particular cases. We have the equation of displacement, x is equal to a sine omega t plus phi. Now case 1, if the particle starts SHM from the main position,
तो mean position, the value of x is 0, the time will starts from 0. सो मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, और जैसे ही पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट होगा, आप स्टॉप वॉच स्टार्ट करोगे तो टाइम भी 0 से स्टार्ट होता है, तो t की जगह पे 0 लिखोगे, x की जगह पे 0 लिखोगे, एंड यू विल गेट 0 इज इक्वल टू a sin phi, और a को आप इक्वल साइन के यहाँ पे लेके जाओगे, दैट मीन साइन फाई इज 0, और साइन थीटा 0 कब होता है, जब थीटा की वैल्यू 0, और यहाँ पे थीटा नहीं है फाई है, तो यहाँ पे फाई की वैल्यू 0 है। तो जब पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट होगा तो जो फाई है उसकी वैल्यू 0 रहेगी। सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ फाई इन द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे 0 रख देते हैं फाई की जगह, तो आपको मिलेगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस a sin ओमेगा t। This is the equation of displacement when the particle starts from mean position. अगर पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है तो हम ये इक्वेशन यूज करेंगे। नाउ पॉजिटिव साइन टू बी चोजन इफ इट स्टार्ट्स टुवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन, अगर वो पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव हो रहा है तो पॉजिटिव साइन कंसिडर करेंगे, अगर वो निगेटिव डायरेक्शन में मूव हो रहा है तो निगेटिव साइन कंसिडर करेंगे। नाउ केस 2, if the particle starts from extreme position है मीन्स ये दो पोजीशन है एक्सट्रीम, या तो एम्पलीट्यूड प्लस ए होगा या माइनस ए होगा, और टाइम 0 रहेगा। तो इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट में हम x की जगह प्लस माइनस ए रख देते हैं, t की जगह 0 रख देते हैं, तो प्लस माइनस ए इज इक्वल टू a sin phi, और sin phi प्लस माइनस 1, साइन थीटा प्लस 1 कब होता है, जब पाई बाय 2 रहेगी थीटा की वैल्यू, और माइनस 1 कब होगा, जब 3 पाई बाय 2 रहेगी। तो हमारे पास साइन फाई प्लस माइनस 1 कब आएगा, जब फाई की वैल्यू पाई बाय 2 या 3 पाई बाय 2 रहेगी। तो सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ फाई इन द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वी गेट, तो यहाँ पे आपको फाई की जगह पाई बाय 2 रखना है और 3 पाई बाय 2। तो व्हेन वी विल पुट द वैल्यू पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2, so we know that sin omega t plus pi by 2 is plus cos pi omega t, and sin omega t plus 3 pi by 2 is minus cos omega t. So we will get plus cos omega t, and we will get this as a minus cos omega t. So either x can be written as plus a cos omega t or minus a cos omega t, or we can write x is equal to plus minus a cos omega t. So this is the expression for the particle starts SHM from extreme position। अगर पार्टिकल एक्सट्रीम पोजिशन से स्टार्ट हो रहा है तो आप ये इक्वेशन पुट करोगे। नाउ पॉजिटिव साइन मीन्स ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन से, राइट साइड वाले एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हुआ है। निगेटिव साइन मतलब आप पार्टिकल की पोजीशन थी निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन। Now expression for displacement, velocity and acceleration at time t. We know that displacement is a sin omega t plus phi and velocity is rate of change of displacement. तो x के इक्वेशन का हम डेरिवेटिव कर देते हैं, a sin ओमेगा t प्लस फाई का डेरिवेटिव, a कॉमन निकल जाएगा, हमको डेरिवेटिव करना है sin ओमेगा t प्लस फाई का, और sin ओमेगा t प्लस फाई का डेरिवेटिव होता है cos ओमेगा t प्लस फाई, और डेरिवेटिव होगा ओमेगा t का, और ओमेगा टी का डेरिवेटिव मिलेगा आपको ओमेगा मिलेगा, तो आप ओमेगा कॉमन ले लोगे और आप लिखोगे ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ये एक्स का डेरिवेटिव करने के बाद वी के इक्वेशन मिल गए, तो ये वेलोसिटी के इक्वेशन है। अब वेलोसिटी का जब आप डेरिवेटिव करोगे तो आपको एक्सीलरेशन मिलेगा, आप ए ओमेगा को कॉमन ले लोगे, आप डेरिवेटिव करने वाले हो कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का डेरिवेटिव रहेगा ओमेगा, तो आप ये ओमेगा और ये ओमेगा मल्टीप्लाई होके ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और ये डी टी और डी टी कैंसिल होता है, तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। दिस इज द इक्वेशन ऑफ, सॉरी दिस कॉस यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आने वाला है, साइन आने वाला है, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। This is the equation of acceleration, this is the equation of velocity, and this is the equation of displacement. Now extreme values of displacement, velocity and acceleration. Displacement के extreme values क्या रहेगी, तो x की इक्वेशन हमको पता है, x is equal to a sin ओमेगा t प्लस फाइव। तो पार्टिकल जब मेन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है तो फाइव की वैल्यू 0 है, हम कैलकुलेट किए और t भी 0 रहेगा, तो x is equal to a sin 0, मतलब
x की वैल्यू 0 विच इज मिनिमम वैल्यू। सो मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट मिनिमम होता है, 0 होता है। अगर पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है तो फाई की वैल्यू π/2 या 3π/2 है और टाइम हमेशा 0 रहेगा। तो अगर पाई साइन π/2 या साइन 3π/2 रखते हैं तो हमको प्लस माइनस ए मिलता है। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू प्लस ए होती है और माइनस ए होती है, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू 0 मिलेगी, मीन पोजीशन पे मैक्सिमम वैल्यू प्लस ए या माइनस ए मिलेगी, डिपेंड करता है पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे या निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे। उसके बाद वेलोसिटी की इक्वेशन हमारे पास है। अब हमको वेलोसिटी की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो पार्टिकल अगर स्टार्ट करता है एसएचएम मीन पोजीशन से तो डिस्प्लेसमेंट 0 है हमको पता है, तो हम x की वैल्यू 0 रख देते हैं v की इक्वेशन में। तो हमको मिलेगा v इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह 0 स्क्वायर, x की वैल्यू 0 है तो आपको प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर मतलब प्लस माइनस ए मिलेगा, ये स्क्वायर नहीं रहेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम है, दैट इज प्लस माइनस ओमेगा ए। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। कहाँ पे? मेन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम है। उसके बाद मेन पोजीशन पे वेलोसिटी तो मैक्सिमम है, अब एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी क्या रहेगी? तो एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट होता है प्लस माइनस ए। तो आप एक्स स्क्वायर की जगह पे प्लस ए का स्क्वायर कर दो या माइनस ए का स्क्वायर कर दो, वो ए स्क्वायर आएगा और ये ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 हो जाएगा, पूरी इक्वेशन 0। तो v की वैल्यू यहाँ पे मिनिमम 0 होती है एक्सट्रीम पोजीशन। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे जब हम बोल रहे हैं तो v की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। तो मीन पोजीशन पे v की वैल्यू मैक्सिमम प्लस माइनस ओमेगा, एक्सट्रीम पोजीशन पे वैल्यू 0। अब एक्सीलरेशन की इक्वेशन है, एक्सीलरेशन की इक्वेशन में मतलब हमको क्या फाइंड आउट करना है? एक्सट्रीम वैल्यूज मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा? तो डिस्प्लेसमेंट 0 होता है मेन पोजीशन पे तो एक्सीलरेशन भी 0 हो जाएगा, तो मिनिमम होगा। ऐसे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है एक्सट्रीम पोजीशन पे तो एक्सीलरेशन भी मैक्सिमम रहेगा और ये माइनस प्लस ओमेगा स्क्वायर ए रहेगा। Thus, the extreme position at extreme position, the acceleration of the particle performing SHM is maximum. Extreme position पे maximum, mean position पे 0, extreme position पे maximum. So that's it, student. Thank you very much. I will catch you next time.